हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट अखौरी एंड प्रेडी थर्ड ईयर का स्टूडेंट टू बी डैश का डीवाईपीआईयू कोडी का। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अनुभव शर्मा हैं। प्लीज बताइए अपने बारे में कुछ। Hello, Mr. Praneet, and thank you for calling me to the show. I'm a third year engineering student too, DYPCOE Akhaury sir. And currently I'm pursuing the third year engineering degree in the discipline of artificial intelligence and data sciences. So, artificial intelligence, the flow है daily life का, and everywhere around the world you're hearing the words artificial intelligence. So, diving into that field and looking around what there is, that's one of the biggest crunches of my life. The adventurous crunches which everybody loves. वो चीज मैं कर रहा हूँ मैं, and that's how I feel currently. Okay, thank you so much for coming, giving a precious time here. What's your thought on self improvement? See, self improvement को मैं क्या बोलना चाहूँगा? देखिए, self improvement एक सबसे ज़्यादा important चीज़ है ह्यूमन की लाइफ में। अगर आप खुद को improve नहीं कर रहे हैं, so you can never be a better version of yourself. जैसे like स्कूल में भी जब हम थे और एग्जाम के मार्क्स निकलते, टीचर भी हमें कहते थे कि कभी किसी और से कंपेयर मत करो। तो लाइक दैट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। आप खुद के मार्क्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले एग्जाम में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कम आया था, नेक्स्ट एग्जाम में आपको उससे ज़्यादा आया है, व्हिच मींस यू आर इंप्रूविंग इन दैट फील्ड। एंड खुद को इंप्रूव करना, द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पार्ट ऑफ इट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। वही चीज़ है जो आपको एक स्टेबल लाइफ ही नहीं बोलूँगा सिर्फ, नॉट ओनली स्टेबल लाइफ बट एक स्टेबल फ्यूचर भी देती है। That's my basic thoughts about self-improvement. Okay. Do you set personal goals? See, personal goals, yeah, I do set personal goals, and they vary actually depending on what I'm doing and what I have to do. Like let's say कि मेरा कुछ दिनों में कुछ competition है, so my personal goals थोड़े अलग deadline set होगी, college exam की एक अलग deadline set होगी, but yeah, personal goals भी एक अलग तरीके से set होते हैं, which means कि उनकी अलग अलग responsibility, अलग अलग importance है। और हर एक पर्सनल गोल की इंपॉर्टेंस को समझना, उसको परख कर यूज करना, वो एक मोस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि टफ है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की राह पर चलने के लिए। What do you prefer, long term or short term? सी, गोल्स आर इंपॉर्टेंट। मैटर नहीं करता कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, या इट्स समवेयर इन बिटवीन, एज लॉन्ग एज देयर गोल्स एंड एज लॉन्ग एज देयर अचीवेबल। और जब तक आप अचीव कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कि न डजंट मैटर कि आपका गोल है कि एक हफ्ते में मुझे लेट्स से कुछ XYZ कोई भी चीज़ है आपको सीखनी है, डजंट मैटर कि वो है, या फिर आपको एक साल में अपने आप को यहाँ से यहाँ चेंज होते देखना है, या सी अ बिहेवियरल चेंज इन योरसेल्फ, दैट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज गोल इज अचीवेबल एंड यू आर डूइंग इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। Okay. How you manage to stick to your goals? मैनेजिंग टू स्टेट टू माई सी, करंटली जैसे मैंने पहले बताया कि मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, एंड इंजीनियरिंग इज समथिंग जहाँ पे आपको डेडलाइंस ऑलमोस्ट एवरी डे मिलती है। एवरी डे यू हैव अ डेडलाइन ऑफ असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड न्यूमरस अदर थिंग्स। सो अपने आप को उस कहते हैं ना गोल्स के लिए सेट करना, अब एक फर्स्ट ईयर से आदत बन जाती है, वो एक आदत सी बन जाती है, फिर वो एक बार आदत बस बन गई, सो इट्स ओपन। What motivates you? See, what motivates me to be a better version of myself is one thing: seeing my parents happy. Like obviously, which Indian kid doesn't want to see his parents happy? That's the biggest motivation for every single kid out there. But वो motivation obviously सभी के लिए है, but उसके अलावा भी बहुत सारी motivation, मैं खुद को एक लेवल पर देखना चाहता हूँ। Maybe my parents don't know कि कुछ goals मेरे हैं जो अलग हैं उनके गोल से, उनके एंड रिजल्ट से। सो दोनों के बीच में एक बैलेंस फाइंड करना, दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी। What's your view on mental health? मेंटल हेल्थ, सी, सेल्फ इंप्रूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ मैं बोलूँ। इफ यू आर नॉट मेंटली स्टेबल, आपका दिमाग स्थिर नहीं है एक पर्टिकुलर स्टेट पे, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी सेल्फ इंप्रूवमेंट योरसेल्फ। बिकॉज़ सी, मेंटल हेल्थ क्या है? आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट, आपका ब्रेन अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, और आपका ब्रेन ही खुद की हेल्थ अच्छे से नहीं मेंटेन कर पा रहा, सो इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट विल बी हिंडर्ड and it will not go forward without any, the obstacles will be a lot bigger obstacles which you won't be able to turn around, so that will be the problem. So that's why I say mental health is the most important thing for any human.
अभी करंटली अगर हम देखें अभी तो इंजीनियरिंग में जो डेडलाइंस है ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा हिंडर करती हैं. So being able to find a proper balance, that's what is important for mental health. And if you have a good mental health, you obviously do have a good, self improvement. Do you face challenges in managing your mental health while in college? See, जैसे मैंने अभी बताया कि deadlines they are to screw your mental health, and that's what it is. Mental health बहुत ज़्यादा challenge होती है when you are doing a degree which is, I won't say it's tough. Engineering is not as tough as people make it to be, but when you're doing which is as competitive as engineering and doing engineering in a branch which is close related to computer sciences, artificial intelligence and data sciences which I am doing. वो जो कंपटीशन, वो पीयर प्रेशर एंड पेरेंटल प्रेशर रहता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेंटल हेल्थ के लिए. बिकॉज if you have to be better than somebody, like in my class also there are some people who are better than, not some but many. If I want to beat them, मैं रात भर जाग कर एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर मेहनत करूंगा कि मैं उनसे अच्छा बन जाऊं, बट इन ऑल दैट प्रोसेस मैं अपनी खुद की मेंटल हेल्थ डिग्रेड कर रहा हूं. Do you seek support for your mental health from others, like friends, family? वेल तारक मेहता का चश्मा देखा है? हाँ. तारक मेहता पता है उसमें? हाँ. Think of me like Jethalal and my Tarak Mehta is my mother. So like all my problems, just one call away to my mother back at home. She's just like in Morning Heights also there is the L professor, the professor. Yeah, she's my professor. She's my Tarak Mehta. Like that's the only person I call upon for any problem if I have with mental health and any other problems. That she's always there for me. Why these days students doing suicides and being doing suicides and doing depression and the anxieties because of that? See, most of that thing is because they are not in a good communication, not having a proper dialogue with I'd say with their parents. Because most of the time, why this happens is because parents are forcing them to do something, and it's not the fault of the parents. The kids are not talking to their parents. Ki, I am having problem doing this. It's a struggle for me. They don't talk about that. So, इसके कारण problem क्या बढ़ता है कि parents think yes, this is good because obviously at the end parents want to see us succeed in life. So they see that one thing is good. They want us to do that thing. But maybe we are good in it, maybe we are not. There's a very high chance, there is a good probability that कि हम उसमें अच्छा ना हो. The problem is student starts doing it, उनसे नहीं होता, फिर then they think कि parents से बोला करने के लिए and कि parents से बोला करने के लिए हमें करना भी पड़ेगा, and अगर हमने नहीं किया, so उनको भी बुरा लगेगा and all that. Communication is one thing that can solve everything nowadays. Everything can be solved. वरना पुराने टाइम में तो छोटा भीम में भी वो मार के खत्म कर देता था. अब तो छोटा भीम में भी वो बात से खत्म करते हैं. Do you use any application for self improvement? 2. Alarm clock and call. To whom? To my mother. Okay. To my Tarak Mehta. Okay. Why alarm clock? कॉलेज होते सुबह उठना पड़ता टाइम पर. उठने के लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है यार. रात भर जागे हैं, फिर एक आधे घंटे की नींद के बाद उठना भी पड़ रहा है. That's something. Okay. Do you engage in physical activities? I used to at time, but seeing the tough competition that I have in engineering currently in my own class between my own friends. तेरी माँ की चूत साले बकचोदी